Welcome. My name is Rajiv K. Bajaj, that is RKB, and I'm meeting you now after, shall we say, some time, a long time. ये लेकिन मुलाकात बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी पहलगाम के बाद जो शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, फिलहाल उसको एक विराम दे दिया गया है. विराम मतलब छोटा सा उसका एक अंतराल है अभी. I don't expect it to last. It will not last, let me tell you this. I think very shortly Pakistan will be finished. It is my opinion. And that's been my opinion for a long time, unless and until the Pakistanis realize what they've been up to, unless and until the Pakistanis actually change and start to become a proper democratic nation. अभी पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान is a feudal state. वही है जैसे there was one lady from, I think, the Pakistan Tehreek-e-Insaf party who said in the National Assembly of Pakistan कि पाकिस्तान में सिर्फ शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली, इन दोनों के बीच में पिंग पोंग होता रहता है कि या वो प्रधानमंत्री बनेंगे या ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे या वो प्रधानमंत्री बनेंगे. That's it. I mean, as everybody admits, that as far as India is concerned, there is no question of any family. We are so proud of the fact. जहां तक भारत का सवाल है, भारत में हम लोग we feel so proud of the fact that our prime minister वो चाय बेचा करते थे. हमारे जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के और अब उप मुख्यमंत्री हैं यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे साहब, ऑटो चलाया करते थे. लाल बहादुर शास्त्री जी इतने गरीब परिवार से थे, उनको 2 नदियां तैर करके उनको स्कूल जाना पड़ता था. We are also proud of our rags to riches story. As far as Pakistan is concerned, the Pakistanis are still in a feudal mindset. But let's forget about their mindset. Fact remains, आज की तारीख में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अब यह तय कर लिया है कि ना न्यूक्लियर ब्लैकमेल चलेगी, ना कुछ और चलेगी, और साथ में अमेरिका को भी करारा जवाब दे दिया है. क्या जवाब दे दिया है? We don't want any mediation. We have decided for a ceasefire at the American request, essentially because of the fact that we were suffering. We had more to lose, let's be very clear. India mein business was suffering. IPL was suffering, for God's sake. IPL starts again today, thank God. 31 airports were closed, business was suffering, the Chinese were celebrating. Let me tell you this again. As far as we are concerned, we are forgetting the elephant in the room. The elephant in the room is China. जब तक हम लोग चाइना का या सोल्यूशन नहीं निकालेंगे या चाइना से शेक हैंड नहीं करेंगे, ये खत्म होने वाला नहीं है. जैसे मैंने पहले बोला था, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ जहां 26 हमारे लोग कत्ल किए गए, पाकिस्तान में इतना जिगरा नहीं है कि वो खुद कर सके. दिस इज चाइना, लेट्स बी वेरी क्लियर. इज द चाइनीज. And we've done it. We've done a very good job. We've actually destroyed all Chinese missiles. We've destroyed the Chinese systems. As everybody says, the standard joke in India, हर एक को मालूम है. और standard joke in Pakistan भी है. चाइना का माल चलता नहीं है सब. लेकिन अब वक्त आ गया है. ठीक है, Shashi Tharoor साहब has been appointed effectively leader of the delegation which will go abroad, which will go to the United Nations. Dr. Shashi Tharoor from the Congress, who was actually in the United Nations. He was deputy chairman and so on and so forth. मोदी साहब ने वही किया है जो पीवी नरसिम्हा राव साहब ने 1994 में किया. अटल बिहारी वाजपेयी जी को हेड ऑफ द डेलीगेशन बना करके एट द यूएनएससी, एट द यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन इन जिनीवा, और वहां पर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी और सलमान खुर्शीद साहब ने जो हिंदुस्तान की का पक्ष रखा, माशाल्लाह जबरदस्त. The whole Pakistani move failed completely. The entire Pakistani resolution was defeated. Mr. Modi has done exactly the same thing, which is fantastic, great. But don't forget, who's your real enemy? इसके पीछे कौन है? You remember the movie Godfather? Do you remember the movie Godfather, The Meeting of the Dons, which is called by Don Vito Corleone after the death of his son, Sonny, and he calls it, and the peace is supposed to be between Tattaglia and Corleone.
What does Vito Corleone, the Godfather, say when he gets into the car and tells Tom Hagen? It's only now that I come to realize that all along it was Barzini, not Tattaglia. As he says, Tattaglia is a pimp. Tattaglia is a pimp. It is really Barzini. So is the case with Pakistan. Pakistan is a pimp. The real factor here is China. Now we've got to deal with the Chinese. Let's be very, very clear. Which means more money for defense, which means more money for everything else, which means the government of India has to open up the markets in such a way that the entrepreneurial spirit of India comes forward, and there should be a manufacturing unit in every garage. Our universities should become centers of innovation, invention, original research, and so on and so forth. आपको लड़ना चाइना से, हमको चाइना से लड़ना है. फिर आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान सिर्फ एक मुखौटा है, असली दुश्मन चीन है. आपको उधर लड़ना है. Till such time as you are able to put the Chinese under pressure, put them under back foot, पाकिस्तान बार बार यही हरकत करता रहेगा, because the Pakistanis don't have a choice. आज की तारीख में पाकिस्तान जो देश है वो पूरा गिरवी है चीन के पास. They'll have to do exactly what the Chinese tell them to do. So what do? Hit the Chinese. Hit the Chinese in manufacturing, hit the Chinese in industry, hit the Chinese in trade, hit the Chinese in innovation, in invention, in information technology. That's where we have to go. हिंदुस्तान को, चाइनीज को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में यानी उद्योग में, इन इन्वेंशन में यानी नए नए आविष्कारों में, नई नई चीजों में, आपको चाइना के साथ हम लोगों को, भारत को वहां पर कंपीट करना पड़ेगा. डोंट लूज साइट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट. असली ऑब्जेक्टिव क्या है? पाकिस्तान नहीं है. मैं फिर बोलता हूं, पाकिस्तान नहीं है. असली दुश्मन चाइना है. और आज की तारीख में हम लोग इतने ताकतवर नहीं है, इतने शक्तिशाली नहीं है कि पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नॉट पाकिस्तान, चाइना के साथ डायरेक्ट लोहा ले सकें. तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू ब्लॉक द चाइनीज एवरीवेयर एल्स. You will have to block them in trade. You will have to compete with them in business. You will have to compete with them in all the areas where they are strong. You remember what Trump said just the other day? He told Tim Cook, the CEO of Apple, don't go to India. Don't go to India. I wonder whom Trump is fronting for. Try and investigate. You'll find a Chinese connection somewhere where Donald Trump is concerned. Why is Donald Trump trying to help China? एक चीज याद रखें, चाइना में जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, धीरे धीरे करके सब हिंदुस्तान आएंगे. कई वियतनाम जा चुके हैं, बाकी हिंदुस्तान आएंगे. I'm so sorry. The pollution has got to me. सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान को कंपीट करना पड़ेगा चाइना से at every level. Remember, the business of China is now business. We got to hit them there. क्योंकि a direct fight between China and India does not help anybody. We might win, we may not win, I don't know. I've not really looked at it, but it'll be a fruitless, stupid war with China. You can have a trade war with China, you can have a science war with China, you can have a space war with China, you can have an innovation war with China, you can have an invention war with China. But we have to stop the Chinese somewhere in terms of financing, in terms of money. At the moment, the Chinese economy is far, 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 far bigger than ours. We've got to get there. मैं कहता हूं आज की तारीख में हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. जिस दिन भारत $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, उस दिन भारत को किसी भी जगह से खतरा नहीं होगा. याद रख लीजिए. So I agree with Mr. Modi. Ceasefire with the Pakistanis, absolutely fine. But now, give us fillip to the economy, improve your licensing, liberalize your economy, and stop this raid raj. ये रेड राज को बंद कीजिए. हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके हाथ खोल दीजिए. उनके हाथों में, टांगों में जो अभी बेड़ियां बांध रखी हैं उनको खोल दीजिए. वी हैव टू compete with China.
हाउ विल वी compete with चाइना? इससे भारतीय मस्तिष्क से, बुद्धि से चाइना के साथ हमें लड़ना पड़ेगा. एंड रिमेंबर, you heard it right here first. This is what I had said on the 22nd of April. I am saying it again today on May the 16th. China is the enemy. Pakistan is just a pimp. That's it. That's all I've got for you in tonight's little talk. My name is Rajiv K. Bajaj. That is Rajiv Kumar Bajaj, otherwise known as RKB. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद. भारत माता की जय.